Very good evening to all of you, and welcome to After Hours with William O'Neill India. So it was again a good day for the markets. So opening was somewhere around that 17,500, 550 levels. So looking at the global market cues, again ऐसा ही हुआ कि हाँ global market थोड़ा weak दिख रहा था, but India was able to hold a certain level. So Nifty was not falling below that 17,500 mark, and from there, so this is the intraday chart. So you can see after the opening there was almost more than 100 points momentum in the Nifty in the initial 60 to 80 minutes, and then it consolidated in a certain range, but the range was above that 600 level. If you can see low यहाँ पे 618 का था, फिर यहाँ पे 629 का था. ठीक है, so higher lows and higher highs. So यहाँ पे भी almost 81 का high बना, फिर यहाँ पे 83.15 का high बना, and closing was also decent, like above a certain level. So overall there was no issue. So today relatively volume was lower. So the Nifty is going through a consolidation phase, and I think that will be more visible in this graph. So yes, over here you can see, after it made a high of that 17,992 last month. Okay, so almost since last 12-13 session, Nifty is, after falling for 2 days, it is consolidating in a zone. यहाँ पे एक बार थोड़ा झटका लगा था एक दिन के लिए, बट दैट वाज जस्ट ओपनिंग, क्योंकि ग्लोबल मार्केट बहुत ही वीक था, शार्प फॉल था यूएस मार्केट में, यूरोप मार्केट में, but Indian market after opening around that 150 level, it was again able to hold that 150 level जो previous consolidation low था. So यहाँ पे निफ्टी ने 5-6 दिन के लिए consolidate किया था, look at over here, and so that low Nifty was able to hold over here also. And then again, so good, the good part is that this green line over here, that is the 21 EMA, that is the exponential moving average, and Nifty is consolidating above that moving average, so which is positive. And I think now in this week, I think the action might be set if Nifty breaks about this consolidation zone. अगर यहाँ से ऊपर निकल जाता है, then the further up move at least towards the 18,000 level looks possible on the chart, or even if breakout from here, it can move further higher. But the strength in the broader market in the sectorial indexes is even more. If you look at this chart is of Bank Nifty, right? This is Bank's chart. So Bank Nifty has already retaken the high that previous जो यहाँ पे Nifty ने high बनाया था. ठीक है, निफ्टी अभी ले नहीं पाया वहां से. निफ्टी देखो 2 दिन बैंक निफ्टी भी गिरा, निफ्टी भी गिरा, देन निफ्टी इज कंसोलिडेटिंग इन दिस फेज, राइट, यहाँ पे. बट बैंक निफ्टी हैज आल्सो मूव्ड हायर फ्रॉम हियर, एंड इट गिव अ फ्रेश क्लोजिंग. जो आज का क्लोजिंग था वो 39,800 के ऊपर आया है, एंड द प्रीवियस हाई क्लोजिंग वाज समवेयर अराउंड 39,759. सो वहां से एक ऊपर क्लोज दे दिया है बैंक निफ्टी ने, सो विच इज वेरी पॉजिटिव, right? So I think the good part is Bank Nifty has a major weightage in Nifty. So अगर Bank Nifty lead कर रहा है रैली को, then it's high probability कि Nifty भी थोड़ा ऊपर की साइड रह सकता है, because the major जो है weightage that comes from the banking stocks, the financial stocks. Even the financials are doing great. So that's why you can see the Nifty over here, like it is holding a certain level, even though there is some fall in the IT sector. अभी IT sector का भी बड़ा weightage है, वहाँ पे fall आ रहा है, but Nifty is able to hold the level as Bank Nifty is holding really well strong. And if you look at the broader market, it has been really good. If you look at the small cap index today, almost up 1.2, 1.3%. So now the cash market, the broader market, has started to outperform the benchmark index. And this is generally the trend, guys, we observed. I think last week also we discussed about this, that yes, now the momentum will be shifting towards the broader market stocks, because Nifty, after a very good move, it is in the consolidation mode. And whenever Nifty is consolidating near its high, generally 21 DMA के EMA के above जब Nifty consolidate करता है, means it is strong.
सो जब बेंचमार्क इंडेक्स में स्ट्रेंथ है, वहां पे कोई वॉलिटिलिटी नीचे की साइड ज्यादा नहीं है, देन कैश मार्केट टेंड्स टू आउट परफॉर्म ड्यूरिंग द दैट टाइम. If you look at the top losers and gainers, so yes, again the metal sector is coming into the momentum, and ITC making fresh highs. So it is almost 2018 का जो उसका हाई था, सितंबर में ही बनाया था. आई थिंक सितंबर 4th को या 3rd को बनाया था. द डेट इज 3rd और 4th. बट हाँ, वो हाई को आईटीसी ने निकाल दिया है. सो इट्स एट ऑलमोस्ट 4-5 year हाई यहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है. सन फार्मा coming into the positive momentum. On the flip side, कोई मेजर लॉस नहीं था. आई थिंक द हाईएस्ट वाज 1.7 ऑन द नेस्ले. अदरवाइज अगर देखिए टॉप 5 में भी आइशर ओनली 0.7%. देयर वाज नो मेजर on the losing side. The names were Britannia, Bajaj Auto, Ultratech. If you look at the sectoral indices, yes, the closing of Bank Nifty excellent, 39,800 के ऊपर आ गया. Even if you look at the financial service, the FMCG थोड़ा फ्लैटिश था आज. मिक्स एक्शन था. मीडिया वाज डूइंग गुड. आईटी फ्लैट था. metals, see here the strength was good in the metals. Pharma is trying to now move towards the improving zone, and along with the banks, the PSU banks are outperforming, no two ways about that, and the realty stocks doing well. If you look at the key news like IEX, August volume declined on a YOY basis, but it grew almost 9% on a month-on-month basis. Then if you look at the Tata Motors news, JLR UK sales was down on a month-on-month basis around 62%, but it grew almost 3.4% on a YOY basis. Then there were other few news from Labs. Then DCB Bank, it hiked its lending rate by around 10 bips. India's, yes, these two important macro. India's August service PMI grew to 57.2 versus 55 on 0.5 on a month-on-month basis. And Eurozone came out with its August service PMI, and it was around 50.9 versus estimate of 52.5. But yes, anything that is expanding, तो ये इसमें क्या होता है, ये नंबर में 50+ जो होता है, दैट मींस द सर्विस सेक्टर और द मैन्युफैक्चर एक्सपांड हो रहा है. सो विच इज गुड. अगर 50 के नीचे कोई भी नंबर जाता है, देन दैट इज टू बी लुक्ड आफ्टर कि हाँ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है इकोनॉमी में. सो अबव 50 इज फाइन. हाउएवर एस्टिमेट से आई थिंक ऑलमोस्ट 1.5 कम आया, which is not that great, but what I take positive from here, it is still sustaining about that 50+ level even after a lot of troubles. Now the last section, the chart of the day. So this shipping stocks, the transportation equipment manufacturing, the sector is doing quite really well. So if you look at the garden research shipbuilders and engineers, their order book is very very strong. जो डिफेंस के उनके ऑर्डर है, जो इंडियन नेवी से उनको ऑर्डर मिल रहे हैं, दैट इज बीन एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड यू कैन सी द सिमिलर थिंग इन द चार्ट एज वेल. देखिए यहाँ पे शार्प फॉल आया था, ठीक है, ऑलमोस्ट 325 से 207 का फॉल था. बट वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम ऑलमोस्ट हाफ था जितना अभी है. एंड नाउ व्हेन इट स्टार्टेड टू मूव हायर, यहाँ पे देखो जो फर्स्ट फेज में वो मूव हुआ, वहां पे वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीमेंटल आया. और अभी जब वो राइट साइड ऑफ द बेस में अभी जो वो ऊपर मूव हो रहा है, तब लुक एट द वॉल्यूम. सो वॉल्यूम्स आर एक्सेलेंट. सो दिस इज अ रियली गुड सेटअप as far as the formation is concerned, and this base is 1C. So first stage base is always good. One more thing I like about this stock is the relative strength. So relative strength line देखिए अब ऊपर जा रहा है एकदम. Others ratings are also good. Master score of 80 is decent. EPS of 93 means उसका earnings काफी अच्छा है, ठीक है. प्राइस स्ट्रेंथ ऑफ 76. एक्यूमुलेशन इज बेस्ट, A+ का एक्यूमुलेशन है यहाँ पे. एंड ग्रुप रैंक इज अमंग द टॉप 20. 14 का ग्रुप रैंक है. सो इंडिया में 170-75 टोटल 197 ओनिंग ग्रुप्स है, उसमें से ये टॉप 20 में आता है. सो द ग्रुप इज डूइंग रियली वेल, नो डाउट अबाउट दैट. Other thing you should look for over here is the number of funds holding. So September 21 में there were only 15 funds, and now you can see there are 35 funds. So it's more than double the number of fund holdings. And the group is also doing quite well. The Mazgaon also belongs to the same group.
and so entire group is doing well. Here the technical setup for GRSE is well. So this looks very good for the watch list, and it's 6% to pivot. So the breakout should be watch out. ऐसा भी पॉसिबल होता है, जब भी ऐसा कप बनाता है ना, तो पॉसिबल है कि यहाँ पे हैंडल भी बन जाए छोटा सा, ठीक है। तो यू शुड लुक आउट फॉर दैट कि हैंडल बनता है या उससे पहले अगर ब्रेकआउट होता है, देन यू वांट दैट ब्रेकआउट ऑन अ वेरी हाई वॉल्यूम, राइट। So that's it for the today's session of after hours. So see you tomorrow at 8:45 in pre-bell with William.